योजना जय श्रीराम देवजानी ब्रजेश ब्रजेश सर सचदेव देवजानी अर्चिता सर सीयूटी अच्छी जल्दी स्टार्ट कर हाँ जल्दी स्टार्ट करके हम सारी दबा तुम एग्जाम जेहेतु अच्छी ओके तो कौन कौन आमर डिस्कशन करियर अच्छी दैट इज सीयूटी तुम काली जो मैंने पेपर देके आसते 15 मे तो सेमानकर बायोलॉजी क्वेश्चन तो एठू तुम रिलेट कर पारो तुम केते क्वेश्चन ठीक करके आस एंड क्वेश्चन रो एनालिसिस करके जहां जणा पड़ुची टोटली ऊपर 100% बायोलॉजी क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी रु ही कॉपी कराइछि कॉपी एंड पेस्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक जदि तुम फॉलो करथिबो ताले तुम माने रिलेट करि परिबो डायरेक्ट 100 रो 100% क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कोटे कॉमा फुल स्टॉप भी छडा जायनी डायरेक्ट एवरी सेंटेंस को कॉपी कराइछि और पेस्ट कराइछि 12th एनसीईआरटी रो सबु जाक लाइन पूरा टू दी पॉइंट कॉपी कराइछि एटा माइंड रखि दो आज जो पिला माने एग्जाम दोचो तो से माने भी जदि एनसीईआरटी फॉलो करतो तो फिजिक्स एग्जाम अछि आई थिंक तो से माने भलो करि के आसीबो तो चलो हमर प्रीवियस काली कोन कोन क्वेश्चन रो पढिसला ताको नै डिस्कशन करिया फर्स्ट क्वेश्चन त पाकर अछि एनालॉग स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इवोल्यूशन रो क्वेश्चन एनालॉग स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पैरेलल इवोल्यूशन एंड रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन तो आंसर कोन हबो दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमें जानि छे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कोन दैट इज द सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन हमें जानि छे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मींस that is the same origin different function but same structure different function and analogous होची convergent evolution जोटा कि different structure but same function जेमति wings of a butterfly and birds and flippers of penguin and dolphin तो आंसर कोन हबो that is analogous structure convergent evolution तो जो माने convergent evolution करछो से मानकर आंसर परफेक्ट then next question जिबा which of the following does not affect the Hardy-Weinberg equilibrium सेही evolution रो क्वेश्चन तो याकू केते जण पिला कोन आंसर दैछंती Hardy-Weinberg प्रिंसिपल टा जनरली श्रद्धा पूरा न्यू लुक 2 जीन माइग्रेशन 1 कन्वर्जेंट ओके तो यार आंसर कोन हबो जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को जनरली किया भितरु अफेक्ट करेनी हमें जानि छे पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी रे लिखाई छी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जनरली अफेक्टेड बाय 5 फैक्टर दैट इज नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन माइग्रेशन and gene recombination and that is gene pool ta affect kareni that is does not affect the Hardy-Weinberg equilibrium. Next question, which of the following primates was more like an ape कोन आंसर को माने कोन करछो 2C परफेक्ट ठीक अछि which of the following primates was more like ape Drypithecus and Ramapithecus आ भितरु जनरली Drypithecus ता का बळे देखिया पई that is ape सदृश तले आंसर कोन हबो that is Drypithecus तले 3 नंबर आंसर कोन हबो दैट इज 2 ड्राइपिथागस तो जो माने ड्राइपिथागस मारचंती तो से मानकर आंसर परफेक्ट सुभस्मिता महाती शशिदेव ओके द न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विथ डैश मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन हमें जानि छे न्यूक्लियोसोम ता एसोसिएटेड विथ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन बा हिस्टोन ऑक्टामियर बोली कहउछे ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइनिंग रे क्वेश्चन ताले आंसर होची दैट इज 8 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हबो 3B परफेक्ट 3B एंड 4 हला देन 5 क्वेश्चन को चलो सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो तमे जे देखिबो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रो लास्ट पेज रे पूरा डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कराई छी पूरा ये लाइन चारटा जाको जति की देछि ए बी सी डी ई पांचटा लाइन पूरा डायरेक्टली सेमती कॉपी एंड पेस्ट कराई छी दैट इज द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस एंड द टोटल नंबर ऑफ जीन आर एस्टिमेटेड 30000 तो जनरली ये सबु जाक लाइन जो देखिबा कंप्लीटली ऑल लाइंस आर परफेक्ट एंड करेक्ट सो आंसर देछि कोन ह्यूमन जीनोम को नेकिरी करेक्ट आंसर कोन देछि करेक्ट आंसर दैट इज ए बी सी डी ई तो जो माने एडा करिचो तो समस्त को आंसर हो ए बी सी डी ई ठीक अछि परफेक्ट 5 नंबर डी पूरा डायरेक्ट लाइन संजुला सुनयना डी रेडी नेक्स्ट बा 6 नंबर क्वेश्चन that is smack is chemically तमे जो देखिबो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर रो पूरा लास्ट रेड की तीनटा देछि ना दैट इज मॉर्फिन एंड कोकिन ए सब रिलेटेड जो प्लांट द्वारा जो डिजीज गुडा हमर जनरली होचे बा जोटा हालुसिनेशन प्रॉपर्टी करछि तो सेही रिलेटेड लास्ट पेज रे पर देछि तो एर कोन हबो दैट इज स्मैक इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन मोस्ट इंपोर्टेंट मॉर्फिन टा यूज करा जाय फॉर द पेन किलर ठीक अछि ताले बी जो मानकर आंसर स्मैक को नेकरी करछो डाइएसिटाइल मॉर्फिन से मानकर ठीक अछि नेक्स्ट तमे जानिचो दैट इज सीयूटी रो नेगेटिव मार्किंग था एंड -1 नेगेटिव मार्क इच क्वेश्चन ओके नेक्स्ट बा दैट इज
antibody are secreted by B cell 10 नंबर antibody secreted by B cell देखो जेहेतु हमें क्वेश्चन उडा डिस्कशन करछे तो ताकू नै कि हमें कमेंट पढी कि टिके टाइम टाकू टाइम टा अधिका लागियो सो दैट डायरेक्टली हमें आंसर टा डिस्कशन कर दबा देन आंसर को नै कि तमर जदी कोन प्रॉब्लम थिवो देन जणैबो देन इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लक्स पूरा डायरेक्टली दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट रो क्वेश्चन आ पूरा कॉपी पेस्ट कराई छि क्वेश्चन को सीवेज ट्रीटमेंट टा जनरली कोन करा जाय श्रद्धा किटू रेडी in sewage treatment flux are that is the masses of bacteria associated with the fungal filaments 11 number 3 जो माने 3 करछो से माने that is answer perfect तो देखो तमे जो माने एग्जाम काली देई के आछो तो क्वेश्चन रो एनालिसिस करी कि जानि परथिबो कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करे बेसिकली देखो एनटीए कंडक्ट करू जे हमर नीट हो एंड सीयूईटी हो ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बट जदी जने तमे सेंट्रल लेवल जो जॉब पे प्रिपरेशन करछो जेमति कि एंट्रेंस पे प्रिपरेशन करछो जेमति कि नीट हो किबा सीयूईटी हो तो यार क्वेश्चन तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी रो पाइबो एंड सीयूईटी रो क्वेश्चन केवल 12th ही पढिबो सो दैट 12th बुक रो जदी परफेक्टली जनकर मन थिबो सब क्वेश्चन ही ताको आस्तिबो कारण डायरेक्ट लाइन कोन सी बुलेइबा की क्वेश्चन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कोन हो स्टार्टिन क्लॉट ब्लास्टर स्विस साइक्लोस्पोरिन ये भी पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी रे सब जक पूरा एग्जैक्टली देछि ताले हम जानि छे साइक्लोस्पोरिन एटा दैट इज ट्राइकोडर्मा पोलिसफॉर्म जदी जनकर गोटे मिस दैट इज अरेंज कर दोछो देन हे जाउची स्विस दैट इज द प्रोपिनोबैक्टर शर्मानी ताले कोन हो सीआईवी वेयर इज द सीआईवी 2 ऑप्शन एंड डी डबल आई दैट इज ऑप्शन 2 ए ट्रिपल आई ठीक अछि देन क्लॉट ब्लास्टर दैट इज द स्ट्रेप्टोकाइनेज व्हिच इज यूज्ड फॉर द क्लॉट ब्लास्टर एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज BI ready next चलो the betel used as the biocontrol agent for the aphids and mosquito तो जनरली जो देखा जीवो जो बेटेल टा यूज कराउ छी फॉर द बायोकंट्रोल एजेंट फॉर द aphids and mosquito बेटेल टा कोटा लेडी बर्ड हबो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आई थिंक लेडी बर्ड ही हबो दैट इज लेडी बर्ड इज ए बेटेल तो बेटेल जेतु मेंशन कराई छी दैट इज लेडी बर्ड परफेक्ट द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस मेथड इन्वॉल्व्स जनरली डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस जोटा सेटा जो मेथड टा कोथरे एट इन्वॉल्वमेंट अछि आइडेंटिफिकेशन नो फर्मेंटेशन नो एप्लीकेशन नो दैट इज प्यूरिफिकेशन जो माने प्यूरिफिकेशन करछ से मानकर ठीक अछि नेक्स्ट दैट इज सेम इवोल्यूशन रो क्वेश्चन देखो इवोल्यूशन रो क्वेश्चन आई थिंक तीनटा एठी हमें पढ़ला भीतर तीनटा क्वेश्चन पढ़िलानी तो इवोल्यूशन रो क्वेश्चन दैट इज फ्लाइंग स्क्विरल दैट इज फ्लाइंग फैलेंजर देन जो देखबा एंटेटर टा दैट इज देखबा हमें दैट इज नंबर आई थिंक देखाउ न तो मो टिके दैट इज बॉब कैट that is BIV so BIV where is BIV so that is option A double I and BIV then C होची I and D triple I ठीक अछि बस पूरा इनसेटर लाइनिंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट भीतर कोटा प्यूरिफिकेशन श्रद्धा किटू परफेक्ट पायल बढ़िया अछि क्वेश्चन टा डिस्कशन कर दो देन तमर आज एग्जाम पे ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन तो क्वेश्चन डिस्कशन कर दो देन तमे तमर जाई करी आज जो एग्जाम अछि ता पय तमे फुली प्रिपरेशन हो एंड एग्जाम सेंटर जाई पहुंचो ओके आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचारछि इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइनिंग रो क्वेश्चन तमे जे देखिबो टाइफाइड डिजीज रे पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइनिंग सो ठीक अछि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस पर डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन लीव्स एंड फिंगर्स में टर्न्स ग्रे ब्लूइश कलर सीवियर निमोनिया पूरा लाइन रे निमोनिया डिजीज तळे लिखा आइछि निमोनिया इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला दिस इज रॉन्ग निमोनिया टा साल्मोनेला द्वारा होएनी हम जानि छे टाइफाइड डिजीज इज कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफी सो डी इज इनकरेक्ट एंड आंसर इनकरेक्ट पचारछि सो डी ओनली नेक्स्ट बा दैट इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 पूरा डायरेक्ट तो देखिबो दैट इज आर बी हेल्थ ऑफ डिजीज चैप्टर भी देखिबो कंप्लीटली पूरा गोटे पेज रे पूरा एटा देछि फिजिकल बैरियर साइटोकाइनिन बैरियर ताले फिजिकल बैरियर किए देखो फिजिकल बैरियर हमें जानि छे फिजिकल बैरियर होची म्यूकस कोटिंग एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर किए फिजियोलॉजिकल बैरियर जो देखबा दैट इज टीयर्स फ्रॉम द आई एंड दैट इज द साइटोकाइनिन बैरियर किए इंटरफेरॉन AIV where is AIV then that is the BI physical barrier BI कोठी that is 4 ठीक अछि D double I परफेक्ट ताला आंसर कोन हला 4 तो जो माने 4 करके आसो से माने करो परफेक्ट नेक्स्ट that is the ट्रांसिन यूज फॉर प्रोडक्ट देखो एटा भी बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन एंड बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन तुम देखिबो डायरेक्ट एनसीईआरटी रे
गोटे मैं कहली तुमको क्वेश्चन एनालिसिस करके तुम एतिकी बुझ पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी को पूरा चुपड़ा होके थुआइछि पूरा लाइन को टू दी पॉइंट लाइन को ही मेंशन करी थुआइछि ताल अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा क्राई आईएसी एंड क्राई डबल आईएबी यूज्ड फॉर द कॉर्न बोरर क्राई आईबी फॉर द कॉटन बॉलवर्म that is DIV. Where is DIV? DIV, DIV. Then that is alpha 1 antitrypsin for the emphysema. A triple I. That is option 1. Next that is expand the GEAC. Already GEAC को नहीं कि नीट रे भी क्वेश्चन पचास सारछि एंड एथरे भी क्वेश्चन. GEAC रो फुल फॉर्म कोन तृप्ति प्रियंका श्रद्धा केटू बढ़िया लास्ट को तुम माने कमेंट करिवो दैट इज तुमर केते मार्क तुमर कैलकुलेशन करी होउछ. That is GEAC Genetic Engineering Approval Committee. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ऑप्शन 4 तो ऑप्शन 4 इज राइट तो ऑप्शन 4 होच तमरा आसीबो दैट इज 4 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एन इंसेक्ट फीड्स ऑन द बीटी प्लांट द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट रे पचारछि एंड आल्सो सीयूटी रे पचारछि कारण नीट रे क्वेश्चन तो माने जो माने नीट देइछो तो से माने जानि परथिबो दैट इज क्वेश्चन डायरेक्टली नीट रे भी पचारछि एंड सीयूटी रे भी जो पचारछि एंड ये भी इंसेक्ट रो लाइनिंग तो व्हेन द इंसेक्ट फीड्स द बीटी प्लांट तो जनरली इंसेक्ट रो अल्कलाइन पीएच that is the alkaline pH of the gut insect ro alkaline pH रे एटा एक्टिव हुए बा प्रोटॉक्सिन टा टॉक्सिन को कन्वर्ट हुए which of the following is not correctly matched pair of organism and its respective cell wall degrading तो जनरली को एंजाइम गुडा को सेल वॉल को डिग्रेडेशन करे बट नॉट करेक्टली हम जानि छे फंगस रो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड इट इज डिग्रेडेड बाय द एंजाइम काइटिनेज एंड प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज डिग्रेडेड बाय द सेलुलेज. Then bacteria cell wall is made up of peptidoglycan and then it's a lysozyme which is present in your tear and also present in your salivary juice. So lysozyme. But answer is algae methylase. ठीक अछि. That is option 2. Next question. Arrange the following steps involved in transformation of bacteria in sequence from initial to end. Generally एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो देखियो बायोटेक्नोलॉजी रो पूरा लास्ट स्टेप देछि जदी गोटे सेल को हमें केमती ट्रीटमेंट करिया जेमति कि से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं परिबो बा दैट इज हमर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करि परिबो कोन ना हीट शॉक फर्स्ट दबा दैट इज द ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट कैटायन बी इज फर्स्ट सो बी देन ताको रिकॉम्बिनेंट डीएनए विथ बैक्टीरियल सेल बीए तो BACED. नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय ELISA ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर थ्रू व्हिच पीस ऑफ डीएनए टू द होस्ट बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए कोटा इनकरेक्ट पचारछि एटा तो इनकरेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व हुए आइसोलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज आर स्टिचिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू अ वेक्टर तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर थ्रू व्हिच पीस ऑफ डीएनए एटा भी ठीक अछि तो दैट इज जो देखिबा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय ELISA एटा भूल अछि ए भूल अछि सी भूल अछि देन हमर जो देखिबा दैट इज डीएनए लाइगेज आर यूज्ड फॉर द स्टिचिंग डीएनए फ्रैगमेंट स्टिचिंग माने सिलाई करिया बा जॉइंटेड करिया तो जनरली एटा हई परिबो तो ऑप्शन इनकरेक्ट जदी हम मागुची दैट इज ए और सी. नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कोटा ट्रू स्टेटमेंट milk obtained from roji is nutritionally more balanced for the human baby than the natural human milk. देखो एठी नॉर्मली जदी हमें एनसीईआरटी को देखिया एनसीईआरटी रे पूरा डायरेक्टली लाइन टा मेंशन कराइछि मिल्क obtained from the रोजी काउ रे जो मिल्क टा ऑपरेट करा होतला 2.4 ग्राम पर लीटर न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर द ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काउ मिल्क दिस इज नेचुरल काउ मिल्क नॉट ह्यूमन मिल्क एडा होची इनकरेक्ट तो कोडा ट्रू पचारछि बायोपिरासी रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसी बा मल्टीनेशनल कंपनी हमें जानिचे बायोपिरासी को नेकरी एनसीईआरटी रे मेंशन कराइछि दैट इज बायोपिरासी कोन ना द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस by the multinational company without the authorization multinational company माने पूरा एनसीईआरटी लाइनिंग मल्टीनेशनल कंपनी वाले बायो रिसोर्स को यूज करछंती विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन नॉट कि फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी माने यूज करछंती बायो रिसोर्स को विदाउट द ऑथराइजेशन दैट इज कॉल्ड एज बायोपिरासी दिस इज आल्सो रॉन्ग तो ट्रू पचार जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज द डिसिसिव बॉडी फॉर द सेफ्टी एंड द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक अछि हम जानि छै जदी कोन से ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई करा होछि तो या रिलेटेड सब डिसीजन नबो किए जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज द दैट इज करेक्ट पछछि करेक्ट सी हबो एंड सी एंड डी तो ए दिटा सेंटेंस ठीक हबो सी और डी करेक्ट नेक्स्ट
देखो ये जो जहाँ भी हमें सॉल्यूशन करछि सब जाक बही रे पूरा तमे फॉलो करिवो डायरेक्टली आंसर रे मेंशन सब हैला कहि दो चैप्टर उडा सब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग पूरा लाइनिंग तमे देखि परिवो इकोलॉजी चैप्टर को जाईकी दैट इज फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन दीज आर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ताकू नै क्वेश्चन डिकम्पोजिशन इज ए anaerobic प्रोसेस भूल पूरा लाइन इनसेट लिखा है इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन इनसेट दैट इज डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑक्सीजन दरकार नॉट anaerobic एटा भूल क्वेश्चन पजाछि कोन दैट इज द करेक्ट आंसर कोन एटा भूल हे गेला decomposition rate of detritus depend upon the chemical nature perfect water soluble in organic nutrient भूल पूरा इनसेट रे मेंशन कराई छी water soluble inorganic nutrients this is also wrong a wrong c wrong तो क्वेश्चन करेक्ट पचार छी तो सी जोड़ते हबनी ए जोड़ते भी हबनी ए जोड़ते हबनी ताले ठीक कोटा हबो बी और डी 1 नेक्स्ट स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप ये तो कॉमन क्वेश्चन सबोल पे स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप भीतर क्वेश्चन पचारे स्टैंडिंग क्रॉप कोन द मास ऑफ लिविंग मैटर इन ट्रॉपिक लेवल दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट कोन अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल एट ए गिवन टॉप then that is the secondary productivity कोन available of biomass for the एटा net primary product rate of formation of consumer ताले कोन हो स्टैंडिंग स्टेट ए आईवी where is AIV here is AIV then जो देखिबा स्टैंडिंग क्रॉप होची मास ऑफ लिविंग मैटर C ट्रिपल आई तो दिस इज आंसर होची 3 पायल 28 3 परफेक्ट पायल बढ़िया अछि श्रद्धा किटू देखो समस्त तमे पायल श्रद्धा किटू तमे सब चेकअप करथाओ दैट इज तमरो लास्ट टू केते काउंट आसे कोटा कोटा भूल होई छला एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज एग्जाम पई तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव एन आंसर दो ए पैसेज ता पूरा डायरेक्ट इनसाइड रु थुआई छी बिना पैसेज पढ़ी भी गोटे पिला आंसर दबो किछि टाइम वेस्ट न करी भी जदी जो चाहिबो एग्जाम रे जने पैसेज न पढ़ी आंसर दबो चुटकी रे आंसर दबो काहे कि ना डायरेक्टली इनसाइड रे पूरा ए पैसेज ता पूरा लिखाई सो दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम जानि छे फाइलेरियासिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज एलिफेंटासिस ऊचरे बैक्रोप्टी ऊचरे मलाई डिजीज ऊचरे बैक्रोप्ट एंड ऊचरे मलाई द्वारा डिजीज ता कॉज हुए एंड इटा गोटे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नो देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द अरेंज द फॉलोइंग of oogenesis oogenesis that means the formation of oogonia or the process of formation of oogonia तो कोन हो प्रोसेस प्रथम होची oogonia रो प्राइमरी oocyte रो फर्स्ट oogonia b then primary oocyte then secondary oocyte then ovum that is answer कोन b c d a where is option b c d a that is option number 2 next question which of the following pair सागरिका हिरणम्य अर्चिता पायल श्रद्धा किटू थैंक यू तृप्ति देखो कमेंट पढ़ी होनी हमें डिस्कशन जेहेतु करछे वीडियोटा परे भी जो पिला माने देखिबे सो डिस्ट्रैक्शन आसी पारे कमेंट पढ़िया रे सो दैट तमे आमे जेतोले नेक्स्ट ओयूटी रो क्लास करिया बा ओयूटी रो पीओ के क्वेश्चन करिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सेतेबेले तम सब पूरा दैट इज 1 to 1 डिस्कशन करी कि हमें भलसे पढ़िया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट क्वेश्चन डिस्कशन जेहेतु तो आंसर उडा हमें कहिया पड़ियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल हमें जानि से मेंडल ताकर एक्सपेरिमेंट रे 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नेथिले एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए कैरेक्टर टेकन बाय द मेंडल दैट इज पिंक एंड व्हाइट फ्लावर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट 45 perfect that is pink and white next failure of chromatid to segregate during the cell division that is called aneuploidy then next 46 3 select the correct matched pair about the sickle cell anemia को नेकी क्वेश्चन that is हमें जानि से sickle cell anemia रे that is RBC ता biconcave रू that is sickle like shape है जाए HBS तो होची phenotype disease cause करे और HBS होची carrier disease ताले C और D होची correct तो correct पचार जी C और D option 1 direct बही रे लिखा है जी direct question है ओडा सब then next Sutton and Boveri Stewart Hanking and Griffith Sutton and Boveri that is chromosomal theory of inheritance then होची Hanking X body Griffith transforming principle D triple I where is D triple I then Hanking X body CI where is CI that is option number 1 A double I that is chromosomal theory of inheritance बढ़िया क्वेश्चन है डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन ओडा सब which of the following statement are incorrect with respect to nucleotide को नेके कोटा incorrect that is called the purine and pyrimidine are nitrogenous base perfect nucleotide are non enzymatic whole nucleotide are enzymatic molecules phosphate group is linked to OH ठीक अछि in RNA every molecule ठीक अछि thiamine is an example of pyrimidine
ऑप्शन पचारछि व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट पचारछि बी टा होछि इनकरेक्ट हबो ताले दैट इज बी इनकरेक्ट थियामिन इज एन एग्जांपल ऑफ अ pyrimidine thiamine टा दैट इज द एग्जांपल ऑफ pyrimidine हबो कारण adenine guanine that is the purine under रे and 49b D and E in RNA every nucleotide correct पचारछि ना ओ correct पचारछि that is correct D and E ठीक अछि that is D and E thiamine is an example of pyrimidine and also every nucleotide OH group process ठीक अछि that is हम कहि परे D and E and also the purine and pyrimidine तो nitrogenous base perfect A भी परिबो तो A ही परिबो and तो ये क्वेश्चन रे टिके गड़बड़ दैट इज प्यूरिन एंड pyrimidine आर नाइट्रोजनस बेस तो दैट इज ए तो भी ही परिबो परफेक्ट करेक्ट पचारछि तो ए ही परिबो एंड आल्सो जदि हमें देखिया दैट इज आरएनए डी भी ठीक अछि एंड थियामिन बा थायामिन इज एन एग्जांपल ऑफ pyrimidine ठीक अछि एडेनाइन गुआनिन होछि प्यूरिन अंडर रे एंड साइटोसिन यूरासिल थायामिन होछि pyrimidine अंडर रे तो ए क्वेश्चन को तमो नै कि मे बी ग्रेस मार्क मिली पारे नेक्स्ट क्वेश्चन arrange the given steps of DNA fingerprinting in the sequence from the initiation end arrange the given step of DNA fingerprint DNA fingerprint प्रथम कोन करबो ना आइसोलेशन ऑफ DNA को आइसोलेट करे अछि ताले फर्स्ट कोन हबो दैट इज हमें ऑप्शन बी आइसोलेशन देन ऑप्शन फर्स्ट बी अछि माने कोठी आसी गला ए देन डाइजेशन ऑफ DNA बी ए डी सी देन होछि ट्रांसफॉर्मिंग प्लॉटिंग करिवो ओके नेक्स्ट that is the cells present in the mature pollen grain हमें जानि छे जनरली mature pollen grain रे dita cell vegetative cell and the generative cell जो मानकर 3 से मानकर perfect then match list 1 and list 2 Phylliform apparatus tapetum exine this is also the question of pollen grain but generally हमें जानि छे sexual reproduction flowering plant रो question exine is made up of sporopollenin then funicle that is attachment of ovule with the placenta then tapetum nourishment of the pollen gland epidermis endothelium middle layer tapetum chatta layer and chatta layer through epidermis endothelium middle layer hochi protection by and tapetum hochi nourishment provide kare Phylliform apparatus guides the pollen tube that is A triple I where is option A triple I B IV this is 2 जो मानकर 2 होइछि से मानकर परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन primary endosperm nucleus is a product of primary endosperm nucleus is a product of double fusion triple fusion apomixis parthenogenesis that is triple fusion apomixis is seed without fertilization parthenogenesis development of female gamete without fertilization in human mammary gland is divided into that is 15 to 20 lobes 4 that is question number in humans it have 4 hobo 15 to 20 lobes 15 to 20 lobes next sex of the human embryo is determined by human embryo sex is determined by the only y chromosome ना x और y chromosome of the sperm और x and y ऊपर डिपेंड करे कारण मदर रो सबल पई x ही आसीबो तो फादर रो x आसले देयर इज गर्ल एंड y आसले बॉय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी रो कोटा कैरेक्टर नो श्रद्धा किटू 55 2 कोन हबो दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी in most it most resistant to the invasion by alien species it is resistant to occasional disturbance all the species are equally important in stable community or absence of one leads to instability देखो what stable community काहे के it must have a resistant to invasion of alien species जदि alien species रो invasion होचे ताको रेजिस्टेंट करे कैपेसिटी थिबा दरकार and it should not show the too much variation and a stable community बहुत सारा variation शो न करचे दरकार डायरेक्ट इनसाइड रो लाइन एगुडा सब then all the species are equal important एटा ही that is answer होची हम पचाची कोन करेक्ट और इनकरेक्ट that is जदि देखिबा क्वेश्चन पचारची that is read the passage which of the following is not a characteristics not पचारची ताले आंसर होबो 3 it is resistant to occasional सब होची ताले आंसर कोन होबो 3 that is all the species are equal important जदि गोटे स्पीसीज पळोची अनस्टेबिलिटी होची एटा भूल स्टेबल कम्युनिटी ता सेमिति नाही गोटे स्पीसीज गले पर भी स्टेबल रहइबो इन रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस रिवर्ट पॉपर Paul Ehrlich रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस करो that is reward signifies the key species next question the scientist who proved the species richness directly correlates with the stable co scientist थिले कि that is the who proved that the rich that is stable community बहुत सारा जो community रा बहुत सारा stable so सेतरे बहुत सारा हमरो that is by animals मनकवा diversity अधिका that is David Tillman then Robert May कहतले 7 million species Edward Wilson that is term biodiversity
Paul Ehrlich, that is the reward buffer hypothesis. Among the vertebrate, which of the following is the most species rich group? Vertebrate भितर species से कोटा insect रो जो diagram रो question. Facebook ram माने that is fishes, तापर birds, तापर reptiles, तापर amphibia, तापर mammals. ताले maximum कोटा fishes. Table रो question है ला. तो ये direct question है उड़ा को. Next. Which of the following statement is incorrect respect to medical termination of pregnancy? MTP. हमें जानी चाहिए generally MTP टा होची प्रथम trimester रे safe. बा प्रथम 3 मास रे if you are doing MTP in the first trimester then it is safe. They are considered safe. Then it is legalized in India from 1971 and it's perfectly true. Then जो देखिबा MTP and can be performed even after the 24 weeks. भूल 24 week ପରେ that is MTP करियाटा illegal बा MTP करी ही होबनी. About 20% of the total number. पूरा strictly inside लिखा है 1/5 of the number of conceived pregnancy undergo MTP. जेति की प्रेगनेंसी होची ता भीतर 1/5 रहउची MTP करा होची बट 20% कहया जा 1/5 कहया से तो दैट इज कोटा होची इनकरेक्ट होची दैट इज ऑप्शन 3. द नेक्स्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कोन हुए जनरली अप टू 8 ब्लास्टोमेयर. वेयर इज द ऑप्शन 8 ब्लास्टोमेयर डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन. ZIFT up to 8 ब्लास्टोमेयर fallopian tube भीतर को इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कोन मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर. वेयर इज मोर देन 8 तो ऑप्शन A triple I. Then जो देखिबा that is DII. Where is option DII? Here that is 2. Next, which of the following method contraceptive is not meant for the female? Among which of the following option that is the contraceptive does not used by the female? Intrauterine device, lactation hormone, vasectomy. Vasectomy is used for the male. That is the vas differences tied and cut off. Sahelian oral contraceptive also known as once weekly pill was developed by CDRI, that is Central Drug Research Institute. CDRI द्वारा. Then होची that is interspecific relationship. तो interspecific relationship रे commensalism कोन +0 माने जनकर लाभ जनकर किछ होने. one species benefited other is unaffected. Mutualism रे ++ दी जनकर लाभ होते both species are benefited. Amensalism -0 जनकर that is क्षति होतो जन किछ होने. one species is benefited other expense to the other. And parasitism +- this one is parasitism and other is unaffected. ताले हबो commensalism AIV. Where is option AIV that option 2 is perfect. The next question, in a country at any time the population has the same number of young and mature ones, that is called a stable community. 3, two close related species can coexist indefinitely and violate the Gauss competition. Gauss competition that dita species दी जण केबे भी हेले रही परिबेनी गोटे रिसोर्स ऊपर डिपेंड करिके. बट एडा केमती दैट इज इंडिपेंडेंट वायोलेट करा हले दैट इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी कि दीटा स्पीशीज कंपटीशन न करी भी रही परिबे. गॉस कर थ्योरी को रिजेक्ट करा गला बाय द रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी. द प्रोसेस रिसोर्स पार्टीशनिंग माने रिसोर्स को पार्टीशन करी पहुंचबे. द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ organic nutrient and inorganic nutrient. Direct answer question पूरा line to line question. Inorganic nutrient from the humus, that is option number 3. Option 3. Next, in which ecosystem the biomass of the in which ecosystem the biomass of primary consumer is greater than producer, that is C. Option 4. ठीक अछि. तो एथरु जहा जणा पडुची that is तमरो CUET 2014 रो काली जो एग्जाम हला तो जनरली ए क्वेश्चन मित्र जणा पडला जहा कि ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. आ तम माने तम देखि परिबो तो जो माने दैट इज CUET पई प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करे को इंटरेस्टेड अछो आइदर ए वर्ष रे जो माने कर CUET हेलानी और नेक्स्ट ईयर पई CUET पई माने प्रिपरेशन करबे कि कोन. तो तुमको गोटी जिंस माइंड रखिया पड़िबो दैट इज पूरा कंप्लीटली 12th रो बायोलॉजी रे जति की चैप्टर रहला ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी ही फॉलो अप करिया पड़िबो. केवल एनसीईआरटी फॉलो अप करिकि एनसीईआरटी रो सब जगह क्वेश्चन एनसीईआरटी रो लाइन को तुमको पूरा डायरेक्टली मन रखिया अछि. जेमति कहै जे नि बुझ न बुझ पढ़ गीता रुच न रुच खा पिता. तो सेमति कि जदी एनसीईआरटी रो कोनसी लाइन जो बुझा पडुनी तो ताको डायरेक्टली मन रखिया दा. जो पिला मानकर एनसीईआरटी लाइनिंग बन दिबो आखी मुजिकिरे मारिबे विदाउट एनी रीडिंग ऑफ पैसेज रो जो दीटा पैसेज पढी तो पैसेज न पढी के पिला आराम से करिके आसीबे. तो सेही अनुसार तो तमे स्ट्रिक्टली मन रखो दैट इज सेंट्रल लेवल रे जति की एंट्रेंस होची नीट हो कि CUET हो ये सब लेवल रे एंट्रेंस पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी रो लाइन टू लाइन क्वेश्चन
एंड तुम मैंने जो जो चैप्टर मु कहली जो जो इवोल्यूशन हो इकोलॉजी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हो तो जहाँ भी जहाँ 12th क्वेश्चन गुड़ा तुम पढ़ी तुम निजे जाकि एनसीईआरटी थोड़े खोजिबो एंड तादरू तुम 100% सब जगह क्वेश्चन पूरा लाइन पाइबो पूरा लाइन गोटे क्वेश्चन भी गोटे लेटर भी बुलिया हिनी तो तुम यही कंक्लूजन रे पाओ कि सीयूईटी रो दैट इज क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी रो कॉपी एंड पेस्ट तो तुम जदि कौन सी पिला इंटरेस्टेड अच्छो सीयूईटी प्रिपरेशन होबा पई नेक्स्ट ईयर पई प्रिपरेशन होबा पई भी इंटरेस्टेड अच्छो बा कोर्स प्रोवाइड करछि हमरो दैट इज विद्यासागर क्लासेस तरफ रो भी सीयूईटी पई कोर्स प्रोवाइड करा होछि सो दैट तुम माने पूरा माइंड रे ये रखी चलिया पड़िबो कि दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी रो टू द पॉइंट क्वेश्चन पछाछि आज जो पिला मानक एग्जाम अछि तो से मानक ऑल द वेरी बेस्ट एंड भल से पढ़ा पढ़ी करो देन हेयर कोन पई काटी देले रोशन बड़ बोंकर बड़ बोंकर काम होइतला बड़ बोंकर डेथ जोगु 10-11 रे जेमति काम करा हुए सो दैट कटाइछि तो तमे एया माइंड रखी चलो एंड आज जो पिलांकर एग्जाम अछि से माने बढिया से जाके एग्जाम देई के आसो देन देखिया क्वेश्चन लेवल तमरो आ जो रेस्ट एग्जाम रहला तार क्वेश्चन केमति पडुची एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो मानकर दैट इज किछि डाउट अछि सो दैट से माने कमेंट रे जणे परिबे जेहेतु हमें क्वेश्चन रे डिस्कशन उडा करथले तो आकु अधिका टाइम में करियाटा टिके प्रॉब्लम हबो बा हमें कमेंट्स जदी पढी पढी हमें जेंति श्रद्धा किटू अर्चिता रोशन पायल तो समस्त को कमेंट पढ़ी हलानी नेक्स्ट जेतो हमें क्लास करिया दैट इज ओयूटी पई स्पेशली हमें जो क्लास करे तो सेथिरे हमें 1-to-1 कन्वर्सेशन करिकि भलसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ठीक अछि एंड आई होप समस्त को एग्जाम भलो हितिबो एंड जो माने दैट इज केते मार्क का रहउची या किछि माइनस होची तो से माने कमेंट रे जणेबो एंड आउ जो आज जो एग्जाम जो पिला मन को रहइला से माने भलसे एग्जाम दियो वेरी सॉरी रोशन इट्स ओके अर्चिता ओके शिव प्रसाद यस सर ठीक अछि ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड बाय फर्स्ट एग्जाम दियो जय जगन्नाथ जय श्री राम।